I'll just repeat the whole thing quickly. So we have this chain rule, which we learned last year, which was d by dx of fx raised to power n. Okay. So as per chain rule, we apply the differentiation. So n comes down, f of x, and this becomes n minus 1. And then you also differentiate whatever is inside this. So isko bhi alag se differentiate karna padta tha. That was chain rule, right? So iske liye example hai d by dx of 3x square plus 2x plus 1 raised to power 5. This whole thing is fx. Okay. So first of all, we'll apply the chain rule. Differentiation kaise kar dete? 5 niche aaya, 3x square plus 2x plus 1 ka raised to power n minus 1. So that is 4. Multiplied by d by dx of this entire thing inside the bracket, this whole function, that is f dash x. So 6x plus 2 say multiply over. Are you getting my point? Yeah. So what we are writing here, this is the power. Power comes down. So I have forgotten to write here n minus 1. And then this n comes down, fx becomes n minus 1. And then you also differentiate that fx. Clear? Now, if we have a trigonometric ratio of sine x, so जो भी x होगा, sin x it becomes cos x. But x अगर कोई function है, तो फिर उसको भी हमको differentiate करना पड़ेगा आगे, so वो multiply हो जाएगा इसके साथ. Example के लिए I have taken sin ax plus b. So sin ax plus b का differentiation हो गया cos ax plus b. But then you also have to differentiate this part. So d by dx of ax plus b, that gives you cos ax plus b multiplied by a. Because if you differentiate, so if it was only sine A, then it will become cos A, and we don't have to multiply again. If it was only sine theta, it becomes cos theta. Then why did you do into x raised to 1 for sine x? That is to make it a rule for us कि अगर कुछ भी अगर इधर x है जो कि एक function है, तो see that rule also applies to suppose ये sin x है, ठीक है, d by dx of sin x. So क्या बना ये cos x बना. Yeah. Then d by dx of this x ये क्या होगा 1 ही होगा ना. So the final answer is cos x only. So that becomes easy for us to remember कि चाहे d by dx sin x के लिए हो, चाहे whatever sin x की जगह कुछ और function हो, हमको वो second function को भी differentiate करना है. x है तो वो straight away 1 हो जाता है, इसलिए doesn't matter. Clear? So cos x into x raised to n minus 1. Cos no, x. Sorry, x differentiation. Yeah. This symbol is for differentiation. The symbol means differentiating, right? Or you want me to write it like this? Is it more easier for you to remember? D by dx of that x. Is it better? Yeah. Now, ठीक है. So understood this rule? तो अगर हम ये समझ गए तो अपना next जो है वो भी trigonometry का ही है. So d by dx of cos, I will now continue writing x. ठीक है? Will become minus sine x. This box will be x. Okay? Multiplied by, again, what will you do? You have to differentiate that d by dx of x. Of that x. Okay? Clear? Yeah. That So we is just have to add a minus sign to the sign. तो ये कुछ formulas तुमको याद करने पड़ेंगे, right? Then आते हैं d by dx of tan box के अंदर x will give us sec square x multiplied by d by dx of whatever is that inside the x, inside the box x, right? Yeah. कोई confusion? No. तो ये तीन हमारे लिए नए functions हो गए. पहला वाला तो हमको already पता था. Trigonometry was something new for us. Okay. Next we come to exponential function. Our fifth identity, fifth formula is exponential. So d by dx of e raised to power x. इसमें कोई change नहीं आता. It becomes e raised to power x only. Okay. But if whatever is there
you also have to differentiate that part. ठीक है, अगर वो 1 है, अगर वो x ही है तो वो d by dx of x ही हो जाएगा, that is 1 only. अगर वो कुछ और है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. क्लियर? No, I don't understand. So we have to differentiate x here. That is the power. That is the power, because that is a part that is with How respect. will we differentiate the power? Okay, example. Let's take an example. d by dx of e raised to power 2x plus 4. Answer will be e raised to power 2x plus 4 multiplied by d by dx of 2x plus 4, which will give us e raised to power 2x plus 4 multiplied by only 2. Are you getting it now? Yeah. The final answer would become 2 e raised to power 2x plus 4. Got it? Next identity. That's for ln. ln कर रहे हैं ना, हमारे सिलेबस में है ना? Yeah. d by dx of ln and again something inside the bracket x will give us 1 upon this x multiplied by again d by dx. Chain rule ही लगाते जा रहे हैं हम लोग हर बारी. d by dx of whatever is inside that box. ठीक? So it's 1 upon x. 1 upon whatever is that inside that bracket, in that box. ठीक है? Clear? कोई confusion? अब इस पे questions करेंगे हम लोग. No confusion? No. And the last one that we, if you saw the syllabus, that it was tan inverse, right? So d by dx of tan inverse in the bracket, in the box, that is equal to 1 upon 1 plus that x ka square. And again, d by dx of that box. Okay? Example ले लेते हैं इसका. Let's say take an example of this. Suppose I have d by dx of tan inverse 3x plus 2. So my answer will be 1 upon 1 plus 3x plus 2 whole square, right? As per the formula, multiplied by d by dx of 3x plus 2, which will become what? 3. 3. So iska answer 3 ho gaya. So final answer would become 3 upon 1 plus 3 upon 1 plus 3x plus 2 ka square, whole square. Correct? And then you can open the bracket, apply the formula, open the bracket and get the simplified answer. Okay? Okay. Acha. Okay. Also, just few important symbols that we need to remember when we are starting this. आपको ये पता है कि अगर एक इक्वेशन, अगर एक fx है और उसको अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो इट इज कॉल्ड एज f dash x, और कभी डबल डिफरेंशिएट किया तो इट विल बी कॉल्ड एज f double dash x. राइट? या फिर अगर मैंने एक सपोज एक फंक्शन है y, उसको डिफरेंशिएट किया तो वो dy by dx होगा, और उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो d square y by dx square होता है. राइट? ये सिंबल्स तो हमको पहले से मालूम है, प्रीवियस नॉलेज है हमारी. ठीक है? और चाहे मैं डैश से बोलूं, चाहे मैं dy by dx से बोलूं, it's still clear to us? Yeah. These are certain things that we needed from the previous what we have done. Okay. अब कुछ questions करना start करते हैं. Our question number 1 is, it is simple one only. Y is equal to 2x minus 3 whole raised to power 6. बताओ.
Can you hear me? Yeah, yeah. So it will be 6 into 6 into, 2x minus 3 raised to 5 okay, into into 2. into 2. So the final answer is 12. 12 into 2x minus 3 raised to 5. Perfect. ठीक है, easy है, not difficult. Yeah. The next one. Cos 2x. That's it, right? And then what about this bracket? We also have to differentiate this, right? Yeah. So 2 into 2. So 2 cos 2x. Hmm. Easy. Next question. Yeah. 2 cos 2x plus pi by 6. So it's minus sin x. Right? So x is only 2x plus pi by 6, right? So minus sin 2x plus pi by 6. Minus sine 2x plus pi by 6. Okay. Into 2 plus into 2 only, क्योंकि pi by 6 तो becomes a constant ना, तो उसमें कोई x component है ही नहीं, हम उसको okay. डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा. Hmm. 2 plus 0. And we have to multiply that 2 also in the That 2 beginning. हाँ, that 2 doesn't get differentiated, तो वैसे ही बाहर आ जाता है, right? Any constant which is there वो आप अलग कर देते हो, right? So the final answer is 4, in fact minus 4 sine 2x plus pi by 6. Why minus 4? Minus sign था ना, Yeah. right? Yes. Yeah, got it. Y is equal to now tan 3x. So it will be x squared 3x. Okay. Sec square 3x. Again? Into 3. Into 3. So 3 sec square 3x. Question number 5. Y e raised to power 2x plus 1. So e raised to power 2x plus 1 into 2. Into 2. Perfect. Next. Acha, I'm forgetting to write dy by dx everywhere. So just make sure that you are writing that. Yeah. यहाँ से differentiate करना start किया ना, that should be dy by dx. ठीक है, जहाँ missing है वहाँ पे. Next question. क्वेश्चंस हो गए हमारे, 5 हो गए ना. ln 1 upon 2x plus 5. 1 upon 2x plus 5 the whole. No. 1 upon 2x plus 5 into 2. so 2 upon 2x plus 5. 7th. Hmm. 1 upon 1 plus 3x the whole square. 1 upon
1 plus 3x square 1 plus 3x whole square into 3. into 3. So the final answer would be 3 upon 1 plus 9x square. Correct? Yeah. Now, this is when we are only talking about, it says, can you see this? Yeah. Together with constant multiple sums, differences and composites. अब हमने ये वाले कर लिए, differences तक कर लिया. Now we are going to learn how to do composites. जब एक साथ 2-3 functions होते हैं. ठीक है? So this much is understood, right? Yeah. कोई confusion नहीं है, simple है यहाँ तक तो. Yeah. Now we move to the next topic. So now I want to learn composites. Suppose my question is y is equal to sin cube x. हमने तो sin x सीखा है, Yeah. right? हमें sin cube x तो सीखा नहीं है. Mm. How to deal with this? This can be written as, you know that sin x is nothing but sin x का whole cube. Sin cube x is nothing but sin x का whole cube. Yeah. Right? So ये कैसा बन गया? This, there is a function. This is a function f of x which has a power. Right? Yeah. तो हमको क्या करना होगा? It becomes n f of x, right, multiplied by d by dx of fx, correct? Yeah, f dash x. Yeah. In the same way, we have to apply dy by dx will become 3 sin x whole square multiplied by, now I have to do dy by dx of sin x, correct? So what does it become? 3 sin square x into sin cos x. We don't have to multiply anything with that. हाँ So we have to multiply anything with that. हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या था? dy by dx of sin x था, तो multiplied by d by dx of x, correct? That is only one. This part is only one, correct? Right? So the final answer is 3 sin square x into cos x. So into cos x, so I can just straight away write as cos x. That's it. That's the final answer. Which clear हुआ? Yeah. This is when we have composite functions का differentiation. That's the first question. So Second we'll always be able to put it in the bracket like that. हाँ हाँ, अभी देखते हैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ का कितना हमें क्लियर है. अब यहाँ पर आया y is equal to e raised to power tan. अब tan आ गया ऊपर, और tan में भी it is 3x. तो सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है हमें? करेंगे तो dy by dx of, ये सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? e raised to power tan ही हो जाएगा, tan 3x, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, अब tan 3x को डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाइड बाय d by dx tan 3x, यही हुआ. तो ये एज इट इज रहा, ये हो गया tan 3x मल्टीप्लाइड बाय d by dx ऑफ tan 3x क्या हो गया? tan का क्या होता है? sec square into
Okay. So x by 3x. That will be multiplied by dy dx of 3x also. Yeah. So Okay. into 3. Very good. So e raised to power tan 3x into sec square 3x into 3. Now you can write your final answer. समझ गए? स्टेप बाय स्टेप मेन फंक्शन को पकड़ना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके साथ वाले ऑपरेटर को कर देना है डिफरेंशिएट, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके साथ कोई ऑपरेटर, तो ऐसे करते 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 हमें लास्ट लेवल तक जाना है और हर किसी को डिफरेंशिएट कर देना है. क्लियर? Yeah. Third question. Y is equal to ln, then it is cos, and then cos के साथ भी 2x. ठीक है? तो सबसे मेन फंक्शन क्या है हमारा? ln. ln को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? 1 upon cos 2x. 1 upon cos 2x. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय d by dx of cos 2x. cos 2x. वेरी गुड. अब इसको करते डिफरेंशिएट. सो 1 अपॉन cos 2x तो पहले से हो ही चुका था. dy by dx of cos 2x is how much? Minus Minus 2x. sin 2x. अब क्या करेंगे? इसके बाद Into 2. डिफरेंशिएट dy by dx of 2x. है ना? So that becomes 2 into 2. So the final answer is minus 2 sin 2x upon cos 2x. It could be tan 2x. Which can be written as tan 2x. Yes, absolutely. Okay. So it's minus 2 tan 2x. Minus 2 tan 2x. So you can get a proving question also from this. They can ask you prove that ln cos 2x when differentiated becomes minus 2 tan 2x. You can prove that? Yeah. Next question. I'm not sure. बताओ. I don't know. Huh? I don't know. Okay. See, main function, can I write this as cos 4x cube? No, but then it will become like the 4 will also get cubed, right? आपको ये पता है कि हम cos of 4x को के होल क्यूब को ही ऐसे लिखते हैं, cos cube 4x. It's always the same thing. So that doesn't get. Sin theta whole square is same as sin square theta. Note. Okay. ठीक है? Okay. So you understood why I wrote it like this? Yeah. Right? Okay. That means now dy by dx of this whole thing would become, सबसे पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? First we write 3, right? 3 into cos 4x raised to 2. Raised to 2. Okay. Into so we'll differentiate cos 4x now. Which will be Minus sin 4x into 4. No. into 4. Correct. Correct. Yeah.
So the final answer is, मैंने अब देखो प्रो हो जाएंगे तो फिर एक साथ सब कुछ कर पाएंगे हम. So 12, I can write it as -12 sin 4x into cos square 4x. Correct? यहाँ तक हमें सब चीजें समझ आई. Yeah. ये हो गया हमारा various types of differentiations. So differentiation formula. So the first part is done. First part is done. अब हमारा next start होगा. This part is done. This is done. We finished. This entire thing is done. ठीक है. पहले मैं आपको इसकी वर्कशीट दे दूं. Yeah. अच्छा नहीं, इसकी वर्कशीट में आपको एक चीज और कराने के बाद दूंगी क्योंकि वो भी यूज होगा. उसके बाद हम वर्कशीट देते हैं. Then I will give you the worksheet. ठीक है. क्योंकि अभी अब वो चीज सीखना जरूरी है साथ में. ठीक है. I'll give you the worksheet next class, not today. Okay. So now we come to a second part of this, which was, if you saw in the previous syllabus, what is the next part? Differentiate product and quotients. Okay. So you understood what are the individual formulas. Then you understood कि अगर ये individual formulas together composite form में आएंगे तो उनको differentiate कैसे करना है. अब जो मैं आपको दे रही हूँ, that is called as the, now what I'm teaching you is called as the product and the quotient rule. ठीक है. Product and quotient rule. ठीक है. दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे. सबसे पहले प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? वी हैव, प्रोडक्ट बोल रहे हो तो इसका मतलब दो फंक्शंस होंगे. दो फंक्शंस होंगे. एक को हम बोलेंगे u और दूसरे को बोलेंगे v. ठीक है. दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है आपको. इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं? We differentiate the first, we keep the first, differentiate the second, add, keep the second and differentiate the first. So it's like u into differentiation of v plus v into differentiation of u. Correct. बहुत आसान है. Very easy. Okay. Example. Y is given, a function is given, which is x and sine 3x. Okay. Is this a product? Yeah. Product है. दो अलग अलग चीजों का. Yes. ठीक है. एक को हम u बोलते हैं और एक को हम v बोलते हैं. Let this be u and this be v. तो हमने क्या बोला? सबसे पहले हम u को as it is रखेंगे, यानी x as it is रहेगा, और हम d by dx of sin 3x करेंगे. करेक्ट. यही सीखा हमने. राइट. एंड फिर ऐड करेंगे, फिर sin 3x को as it is रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x को. क्लियर. अब अपना जो हमने पिछले इसमें सीखा है, we'll apply that. x of d by dx of sin 3x will be cos 3x cos 3x multiplied by 3 plus sin 3x, and this will be only 1. Yeah. So your final answer will be 3x cos 3x plus sin 3x. Clear? समझ रहे हैं? Yeah. ठीक है. साथ साथ अब मैं आपको क्वोशिएंट रूल भी बता देती हूँ. आसान है ये भी बहुत. प्रोडक्ट हमने कब लगाया था? जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे. राइट. Yeah. ठीक है.
यहां पर हमारे दोनों फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। दिस वाज u मल्टीप्लाइड बाय v, दिस इज u अपॉन v, ठीक है। ऐसे में हम क्या करते हैं, इनको अगर डिफरेंशिएट करना हो, सो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन दैट इज डैश विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान रखो इधर डिनोमिनेटर में, जो यहाँ क्या है डिनोमिनेटर v, v, तो इधर हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। और हमको v को ही पहले लेना है, सो v रखना है और u का डैश करना है, ठीक है। फिर u रखना है, v का डैश करना है, बट दोनों में माइनस साइन है, ठीक है। yeah. So denominator first. हाँ, समझ में आया बेटा ये। सो u अपॉन Yeah. v डैश इज इक्वल टू u v एज इट इज रखना है। ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर को पहले ही रखना है, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, अगर हमने गलत कर दिया तो उल्टा हो जाएगा आंसर। Okay. v पहले रखना है, u डैश करना है, फिर माइनस करना है, फिर u रखना है और v डैश करना है, ठीक है। यहां अगर हमने उल्टा कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकेंड वाले में उल्टा कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। Yeah. तो इसका एक एग्जांपल क्विकली करते हैं। y is equal to 2x plus 1 अपॉन 5x plus 4, ठीक है। सो कोशेंट है ये, Yeah. मतलब ये डिवीजन है ना, तो कोशेंट है, में u है ये, एंड दिस Yeah. इज राइट। तो हमको क्या रखना है ध्यान में कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, सो dy by dx ऑफ दिस विल बिकम v का स्क्वायर, यानी कि 5x plus 4 का स्क्वायर, Yeah. फिर v को एज इट इज रखना है 5x plus 4, और u को डिफरेंशिएट करना है, सो d by dx ऑफ 2x plus 1, फिर माइनस, फिर क्या करना है, One second. फिर u को रखना है, Yeah. 2x plus 2x plus 1 5. करना है, एंड d by dx ऑफ 5x plus 4 कर देना है। क्लियर हुआ? अब ये Yeah. डिफरेंशिएट करो और इसका आंसर निकालो। Do I have to open the brackets in the numerator? After doing the whole thing, yes. ठीक है? Yeah. So it's 3 upon 5x plus 4 the whole square. 3 upon 5x plus 4 the whole square. 5x plus 4 whole square, right? Perfect answer. समझ आ गया हमें प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल? ठीक है, अब इसकी वर्कशीट में आपको